Swara Rao Amara sir to introduce Dr. Samir Dhingra sir. Welcome back, students and other dignitaries. Good afternoon. Pointer. I'm very much delighted to introduce our beloved Dr. Samir Dhingra sir. So he is currently the associate professor and head in charge of the Department of Pharmacy Practice. And as you all see on the slide itself, he's also a coordinator for the AMC that is related to this PVPI at Naipur Hajipur. He is also a member of quality review panel of PVPI. Before coming to Naipur Hajipur, he worked for almost 8 years in the University of West Indies. He has almost 18 years of teaching and research experience. He had his doctoral degree from Guru Jambesh University of Science and Technology, Hisar, India. Master's degree from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore. His areas of interest include medication safety and promoting the rational use of medicines among healthcare professionals. So he is professionally active member and known internationally for his work in the fields which I mentioned above. So he is a one best thing which I know about him is he is a co-author in a well-renowned medical journal that is called Lancet. It is a very high impact factor clinical journal. And with these words, I request Samir sir to take over. Thank you. Thank you, Dr. Venkateshwara. Thank you for the nice introduction. You know, the post-lunch sessions are the most difficult sessions. जहाँ सबको जगा कर रखना पड़ता है lunch के बाद. So I have been assigned this special duty so that I can make you wake up and attend this lecture. Okay, and it is not only about this particular lecture. It is a I should say demand of the time when it comes to the patient safety. In fact, whole world is celebrating today World Patient Safety Day. Okay, and it is a coincidence that on the same day we are celebrating National Pharmacovigilance Week also during this week, September 17 to September 23. और अगर सितंबर मंथ को आप देखा जाए तो जितना भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैपन ड्यूरिंग दिस मंथ सितंबर. And this is the month that has a very much recognition with the pharmacists, not only pharmacists, with all other healthcare professionals also. Okay, and the topic which I am going to speak since morning before me, Dr. Clay Silvan, he has also spoken about the pharmacovigilance. He spoke about the adverse drug reaction monitoring, reporting, then medical devices adverse events, reporting, their monitoring. So I wish to extend that component. But before I extend with the the workshop part, that is the VisiFlow, that is the software that is being used to report adverse drug reaction. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी एक ब्रीफिंग मैं करूं कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है once you complete this course after B Pharmacy, or if you are visiting to the hospital setting, if any one of you tomorrow working in industry or working in any hospital setting, you should be aware of what is adverse drug reaction, what is the significance, why we should do, why this responsibility is being given to the healthcare professionals. Okay, so I'll take you towards the little journey, then I will speak about the VG flow. Okay. So students, I think all of you are from pharmacy, and many of you are in your first year, second year, or third year, or fourth year. And all of you are doing your chemistry also, I know. In first year student, they are doing organic, inorganic, physical. In second year, you're doing advanced organic, advanced inorganic. Then in third year, medicinal chemistry, chemistry of natural products, analysis, all those chemistry you're studying. But one thing is very common, all of us, we know all drugs are dangerous, some may be useful. The reason why I'm saying this, being a chemistry fellow, being a chemistry person as a pharmacy graduate, we know very well all drugs basically they are chemical in nature. ये बात किसी से छुपी नहीं हुई कि जितनी भी ड्रग्स हैं बेसिकली दे आर केमिकल्स. ये बात आप समझते हैं ना केमिस्ट्री में. तो फिर ये बात भी आप समझते हैं कि कोई भी केमिकल है वो तब तक ही ठीक है जब तक वो एक लिमिटेड डोज में वो ड्रग के तौर पे टेस्टिफाई है.
आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो एक लैब की बात है, और जब वो नॉर्मल डोज पे अपना नॉर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो वी से इट इज थेरापेटिक इफेक्ट। उसकी एक रेंज है, आप बात समझ रहे हैं? कोलोजी में अगर आप जाइए तो थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं कि जो एक हर ड्रग की एक थेरापेटिक विंडो रहती है, उसकी एक रेंज रहती है। बट वंस एनी ड्रग दैट एक्सीड दैट कॉन्सेंट्रेशन, तो वो टॉक्सिक रेंज में चली जाती है। वो फिनोमिना भी हमें वेल नोन है। लेकिन कुछ एक ड्रग्स ऐसी हैं जो थेरापेटिक डोज के अंदर भी अपना कोई ना कोई इफेक्ट, जो टॉक्सिक इफेक्ट है, वो दिखाती हैं। समझ रहे हैं? तो हमें उस चीज के साथ डील करना है। डील भी इतनी ऑनेस्टी के साथ करना है कि जब हमें पता है, बीइंग ए फार्मासिस्ट, whether we are working in industry or we are working in a hospital setting, if we can formulate the drug, if we can synthesize the drug, if we can discover the drug, if we can, we are the persons behind who are taking these medicines to the market. मार्केट में जाने के बाद अगर उस ड्रग को हम ऐसे लवारिस छोड़ देंगे और उसके जो साइड इफेक्ट है या जो एडवर्स इफेक्ट है, अगर उसको हम मॉनिटर नहीं करेंगे, तो देन वी आर फेलिंग इन आवर ड्यूटीज। इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? कोई भी चीज हम बनाने के बाद उसको लवारिस छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। कोई भी ऐसी चीज जो बनती है मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट उठा लीजिए, चाहे आप कार उठा लीजिए, कोई गाड़ी से लेके छोटी सुई तक, नीडल तक आप उठा लीजिए, मैन्युफैक्चरर ये इंश्योर करता है कि जो उसने चीज मार्केट में भेजी है उसकी फीडबैक कैसी है, उससे किसी तरह का कोई हार्म तो नहीं हो रहा, बात कल को कंज्यूमर कोर्ट में तो नहीं जा रही, बात कल को कहीं और तो नहीं जा रही। चलो कोर्ट की बात तो बात की, उससे पहले ही हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी नीड टू लुक आफ्टर द consequences, we need to look after the effects, those are appearing after it has been introduced into the market. तो फार्माकोविजिलेंस में भी जो ड्रग्स की जो एडीआर की मॉनिटरिंग है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग, उसके लिए टर्म यूज होती है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, पीएमएस। और जो फार्माकोविजिलेंस है ये उसी का ही कंपोनेंट है। और ये जो all drugs are dangerous, some may also be useful. This statement was given by Nicholas Murray, who in a published article in British Medical Journal. It's a renowned journal. Okay, और उनका ये जो statement है, it picked up many healthcare professionals. They have gone through this particular article, and it was written in a very good manner when it comes to the pharmacovigilance. And Nicholas Murray, at that time, he was the president of International Society of Pharmacovigilance also. तो जब सोसाइटी या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की किसी हेड की स्टेटमेंट आती है, तो वो बड़ी पब्लिक में अच्छे से ऑब्जर्व होती है। Okay, so that's why I have taken this statement to just to connect with our basics when it comes to our study or when it comes to our undergraduate program. Student, this is one of the case of congenital abnormality. This picture was published in Lancet journal at that point of time in 1961 when thalidomide disaster came into picture. थैलिडोमाइड ड्रग के बारे में आप जानते हैं? किसी ने थैलिडोमाइड के बारे में सुना है स्टूडेंट्स में से? आपको पता है थैलिडोमाइड कितना बड़ा? ये 1960 क्या हुआ था? This drug at that point of time, it was introduced into the market to control the first trimester nausea and vomiting sensation in pregnant women, and it was being prescribed like anything in European countries and the rest of the world. I think India में नहीं था, but US and other market it was well prescribed of. और ये जब drugs prescribed even Australia, when the physicians or the gynecologists they started prescribing this drug, at one point they started observing कि उसके बाद जो babies, जो fetus जो deliver हुए, उन सब के अंदर congenital abnormality थी। समझ रहे हैं? फोकमेलिया। और उसके बाद दिस इज हाउ वी वोक अप। उसके बाद बड़ा शोर मचा और काफ़ी ग्लोबली जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी एनजीओज हैं, दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। 1961 से पहले कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था, कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं थी जिसमें हम ये बोल सकें कि यस ये जो ड्रग्स हैं इनके थेरापेटिक इफेक्ट के अलावा हमें टॉक्सिक इफेक्ट भी उनके ऑब्जर्व करने हैं। आफ्टर दिस थैलिडोमाइड डिजास्टर द वर्ल्ड बॉडीज, जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज थी, चाहे वो एनजीओज थी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी,
they started recognizing the importance of adverse drug reaction reporting. This is how pharmacovigilance came into picture. And that was the turning point when the Swedish government, Sweden, they took the first step in their Uppsala University and they started the Uppsala Monitoring Center to report the adverse drug reactions. और उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर ने काम इतनी शिद्दत के साथ शुरू किया कि स्लोली इट बिकेम द WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। और आज की डेट में 200 से ज़्यादा कंट्री जिसकी सिग्नेटरी मेंबर हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री इंडिया, जहां से ये ADR का डाटा हम ग्लोबली वहां असेंबल होता है और इकट्ठा होता है। हर कंट्री से डाटा वहां जाता है और वो इस डाटा को एनालाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। Then on the basis of that analysis, they share that feedback or that report to the different regulatory agencies, वो चाहे इंडिया की हो, चाहे आपकी नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान, चाइना, US, कोई भी कंट्री है, उन सब के साथ वो ये डाटा शेयर करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। और उस मूवमेंट के बाद अगर 61 के बाद देखें तो ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल इंस्टेंस था, मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद तो एक ट्रेंड ही चल पड़ा कि वी हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरी सिंगल ड्रग एंड वी नीड टू कीप अवेक आवरसेल्फ। एंड दैट इज द पार्ट वेयर एवरी ईयर almost in every country they celebrate National Pharmacovigilance Week, and India celebrates it between September 17 to September 23, and that is the purpose why we have assembled here today. And let me tell you, when it comes to the state of Bihar, we are the one of the most recognized center for ADR monitoring at Naipar Hajipur. Our Department of Pharmacy practice students, they are going to different clinical facilities, चाहे वो आपका महावीर कैंसर संस्थान हो, चाहे आपका IGIMS पटना हो, चाहे आपका पारस हॉस्पिटल हो, मेदांता, मेडिवर्सल, we try to collect as many as ADRs possible. And I'm very glad to share, though I am not taking any proud in that, but I feel I'm taking it as a sense of responsibility that we are continuously performing well. Last year, we got the certificate from the Indian Pharmacopoeia Commission for the top 10 performing centers all over India. और सिर्फ फार्मेसी कॉलेज नहीं, इसमें जितने भी मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, चाहे वो एम्स हैं, चाहे वो आपके PGI लाइक इंस्टीट्यूट है, PGI चंडीगढ़, जिपमर, उन सब के मुकाबले भी हम टॉप 10 में हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग। एंड इट इज ए मूवमेंट फॉर अस दैट एटलीस्ट वी आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर स्टेट, बिहार स्टेट। And Bihar is the state that is the population with the it's a most dense state with the population. अगर यहाँ से जो डाटा जाता है तो it makes a significant impact on the reporting pattern. And it is not only for pharmacovigilance, even it is for medical devices also. We are among the top 5 performing centers. समझ रहे हैं। और दूसरी चीज, मैं भी इनसे, आपके शिवली नमानी सर बैठे हुए हैं, ही इज ए रिस्पेक्टेड मेंबर, ही इज ए प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ ए प्राइवेट कॉलेज इन मोतीहारी। तो भी मेरे से ये यही डिस्कस कर रहे थे, क्या हम ये स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकते हैं जो बच्चे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स, B.Pharm के स्टूडेंट्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि यस इट कैन बी गिवन, और ये स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी तक जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट से, तो ये चीज आपको शोभा देती है कि डाटा सिर्फ आपकी एक ही डिस्ट्रिक्ट से आए, आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट से ना आए, नहीं ना। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट को दे हैव टू प्ले देयर ओन रोल। तो आप लोग अपनी मैनेजमेंट से मिलिए, प्रिंसिपल और आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनसे मिलिए एंड स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव। और जब तक इनिशिएटिव आप नहीं लेंगे ये काम नहीं होने वाला। और उसका रीजन बड़ा क्लियर है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर के पास गर्दन उठाने की फुर्सत नहीं है, बाहर 200 आदमी OPD में वेट कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते हैं, आप मेरी बात को समझिए। डॉक्टर्स आर द मोस्ट लेबोरियस कम्युनिटी। और ये आपको भी पता है कि जब 11वीं 12वीं में आप नीट का एग्जाम दिए थे, आप नहीं क्वालिफाई किए थे, आपके ही ब्रदर एंड सिस्टर कुछ नीट क्वालिफाई करके MBBS किए थे, ध्यान है ना आप लोगों को। तो आप में से ही निकले हुए वो लोग हैं, तो उनकी अभी भी हार्डशिप उतनी है, लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक दूसरी डायरेक्शन में चली गई हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर पेशेंट का लोड ही इतना है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर के पास कई बार तो वो लंच तक स्किप कर जाते हैं। मैंने कई बार ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि वो सुबह 8 बजे आके बैठते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कब 4 बज गए और कब 5 बज गए। समझ रहे हैं। सेम सिचुएशन नर्सिंग वालों की है।
आपके अगर कोई नियर एंड डियर कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, आपने नर्सिंग स्टाफ को देखा है काम करते हुए? देखा है ना? कई बार तो उनके पास भी फुर्सत नहीं होती कि वार्ड के वार्ड भरे पड़े। और पोस्ट कोविड सिनेरियो में तो आप देख लीजिए कि अब तो मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ी हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बढ़ी हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट का जो पैटर्न का जो लोड है वो कंपैरेटिवली अब बड़ा है। तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ड्रग रिलेटेड, until unless pharmacy graduates they will not come forward, you cannot expect a better India or better community or a better state or a better community, I'm telling you. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्योरली फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। नर्सिंग या डॉक्टर आपको बोल सकते हैं जी सर मेरे पास ये पेशेंट आया था, मैंने इस पेशेंट को ये मेडिसिन दी तो इसको ये प्रॉब्लम हुई है, अब बात समझ रहे हैं। लेकिन जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी रिपोर्टिंग है, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड यू शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज की डेट में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फॉर्म, अगर मुझे नहीं पता आप लोग कितने लिंक्डइन पे हैं या कितने सोशल मीडिया पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, मैक्सिमम जॉब्स रेगुलेटरी अफेयर्स के हैं, या तो वो फार्माकोविजिलेंस के हैं, या वो मेडिकल डिवाइसेस के हैं, या फिर हेल्थ इकोनॉमिक्स को कनेक्ट किया हुआ है फार्माकोविजिलेंस के साथ। मोस्टली रिपोर्ट रेगुलेटरी या फार्माकोविजिलेंस इसी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं। और कल को अगर आप अपनी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्जाम क्लियर करते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या सीजीएचएस का रेगुलेटरी, ये जो आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, चाहे वो रेलवे में फार्मासिस्ट का, कहीं भी जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वंस यू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बड़े फार्मासिस्ट लिखते हैं जी डॉक्टर हमें हमें क्यों नहीं गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन लिखने की परमिशन देती, वी आर एज गुड एज अदर डॉक्टर्स। नहीं, हम अपना अभी कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी निभा ही नहीं रहे हैं। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, वी आर सेलिंग द ड्रग्स, वी आर नॉट डिस्पेंसिंग। और मैं अगर पटना की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग इनटू एनी स्टेट, सभी स्टेट में ये चल रहा है। बहुत सी इंडिया की स्टेट्स, बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वेयर द फार्मेसीज आर बीइंग रन विदाउट फार्मासिस्ट, रेंटल लाइसेंस चल रहे हैं। इट इज वेरी वेरी शेमफुल। और हो सकता है आपके ही कुछ एक सीनियर एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, खुद मार्केटिंग में है, सर्टिफिकेट किराए पे दिए हुए हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि अंतरात्मा मरी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिस है। मतलब आप वो पैसा कोई क्या बोलते हैं, मतलब ईमानदारी का पैसा नहीं है। और ये आपको भी पता है, फोरेंसिक फार्मेसी में रेगुलेशन, ड्रग कॉस्मेटिक रेगुलेशन एक्ट है, वो बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि जो आपकी ड्यूटी है दैट इज ए फुल टाइम ड्यूटी। अगर आप लाइसेंस किराए पे देते हैं पढ़ने के बाद, या आपके सीनियर दिए हुए हैं, देन इट इज ए वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, वेरी अनएथिकल। समझ रहे हैं? वो ईमानदारी का पैसा नहीं है, आप इस चीज को रियलाइज करिएगा। और ये इन एक्टिविटीज के कंपनसेशन में है फार्माकोविजिलेंस, ड्रग मॉनिटरिंग, थेरेपी, आपकी ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच हैज टू बी लुक आफ्टर बाय द फार्मासिस्ट। और अगर प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग थेरेपी आप देखिए तो इट इज नॉट फुली अंडरस्टूड और नॉट इवन एक्सेप्टेड। नो ड्रग इज इनहेरेंटली सेफ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि ऑल ड्रग्स बेसिकली दे आर केमिकल इन नेचर। So when we are talking about the chemical nature, it means no drug is inherently safe unless until it has no effect at all. No effect at all मतलब अगर वो प्लेसिबो है तो बात अलग है। प्लेसिबो आप समझते हैं ना, लेकिन मैंने प्लेसिबो में भी इफेक्ट देखा है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। इवन प्लेसिबो में भी अगर फार्मासिस्ट ने कोई ड्रग किसी को दी है तो उसका इफेक्ट कई बार दिख जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर केमिकल की मैं बात करूं तो कोई भी ड्रग बेसिकली इट इज सेफ इन नेचर एंड ईच पेशेंट इज यूनिक। जनरलाइज थेरेपी नहीं चल सकती, आपको डोज एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, पेशेंट की गिवन कंडीशन के हिसाब से उसकी ड्रग एडजस्ट करनी पड़ेगी। और आज की डेट में तो आप बार बार हम ये बात करते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन। मेरी बात समझ रहे हैं? पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब ही है कि गिवन पेशेंट की कंडीशन, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी जो ऑक्यूपेशन, उन चीजों को देखते हुए आप पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें हमें देखने की जरूरत है, हर ड्रग के साथ है। अगर मैं एक्टिव जॉब में हूँ, मुझे हाइपरटेंशन, सॉरी बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की, क्या आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब मेरे ऑफिस आवर्स, आप मुझे पोटेंट डायरेटिक पे डाल सकते हैं फ्रोसीमाइड पे? नहीं।
अब मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी वर्किंग लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी, किसी भी मीटिंग में मैं बैठ नहीं सकता, एवरी मोमेंट आई विल से ओके आई वांट टू गो फॉर पिस, मुझे वेकमन वॉशरूम यूज करना है, नहीं। आप मेरी बात समझ रहे? तो ड्रग्स का जो यूटिलाइजेशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको पर्सनलाइज करके पेशेंट की हर कंडीशन को समझ के यू नीड टू पुट द पेशेंट ऑन द मेडिसिन। देन ईच सिचुएशन, यहाँ सिचुएशन की भी बात वैसे ही है जो मैं अभी बोल के आपको हटाऊं। So what is the right drug treatment for me might be a bad choice for you. दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं। आप मॉर्निंग में मुझे नाइट्रेट्स दीजिए, क्योंकि मेरे ऑफिस आवर्स में अगर मुझे एंजाइना प्रेसिपिटेट होता है, इट इज गुड फॉर मी। लेकिन अगर वही कोई एयरपोर्ट का वर्कर है जिसको नाइट ड्यूटी देनी है, तो आपको नाइट्रेट का जो टाइम पीरियड है एंजाइना प्रिवेंट करने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए, उसको आपको नाइट डोज पे डालना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलरली कोई ड्रग एक हो सकता है मेरे लिए ठीक हो, एसी इनिबिटर हो सकता है मुझे कफ ना प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है इनको एसी इनिबिटर कफ प्रोड्यूस करे। So recommendation based on evidence from the population with knowledge of deviations. तो by and large हमें जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी है, लेकिन गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं, लेकिन डेली प्रैक्टिस में डेविएशंस को जो अंडरस्टैंड करने का काम है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का है, बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। And what is pharmacovigilance? Basically, the science and activities relating to the detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effects of any other possible drug-related problems. A successful pharmacovigilance system collects, analyzes, and shares drug safety data while aiming to reduce risk to patients in the shortest time possible. And pharmacovigilance applies to both approved drugs as well as those drugs under clinical trials. ठीक है, आगे बढ़े। And pharmacovigilance is sometimes also related to drug monitoring, drug surveillance, then post-marketing surveillance. And extended scope of pharmacovigilance, adverse effects, if those are coming from the properties of ingredients or the patient itself, those also we need to consider, क्योंकि pharmacovigilance एक broader term है. Then patient effect of inadequate product quality, if the drug is failing in GMP. What is GMP? Good manufacturing. What is GCP? What is GLP? Good laboratory practices. आप लोग जॉब के लिए अप्लाई किए हैं अभी या नहीं? नहीं। कौन से ईयर में आप लोग मोस्टली? अभी मोस्टली थर्ड ईयर में है। कितने स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं? बी फॉर्म फाइनल ईयर के हैं? सभी थर्ड ईयर के हैं। फाइनल ईयर क्यों नहीं है आज? एग्जाम चल रहे हैं। हाँ, देन ओके, ट्रेनिंग के लिए गया। बी फॉर्म सेकेंड ईयर। फार्म डी के कितने हैं? अच्छा, फार्म डी आप लोग सभी नारायण इंस्टीट्यूट से। ओके, दैट इज गुड। तो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आपको स्टैंडर्ड्स पता हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या हैं। अभी इंडिया ने अपनी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को रिवाइज किया है, अभी पब्लिक डोमेन में उसका ड्राफ्ट है फॉर द ओपिनियन। दे हैव सर्कुलेटेड, दे हैव गिवन 1 month टाइम फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। So distribution, storage, counterfeiting, all those things come under extended scope of pharmacovigilance. I am not going to go much in detail, लेकिन अगर अपने लेवल पे आपको इतना पता है तो that is sufficient undergraduate level पे. Then patient effects of inadequate use with regard to medication errors, dependence and abuse, then the poisoning. Then safety challenges of mass treatment campaigns, for example immunization programs, then other public health programs. तो ये सारे extended scope हैं pharmacovigilance के. And now there is a shift in focus. जब मैं स्टूडेंट था तो हम बात करते थे मेडिकेशन सेफ्टी की, हमारी बात समझ रहे हैं। लेकिन अब जो ग्लोबल सिनेरियो है 2015 के बाद 2017 के बाद चेंज हुआ है। मेडिकेशन सेफ्टी की बजाय ब्रॉडर पिक्चर में बात की जाती है पेशेंट सेफ्टी की, और उसमें भी जो WHO टेक्निकल ऑफिसर है, दैट लेडी नाउ शी मूव टू US, अदरवाइज डॉक्टर नीलम धिंगड़ा वाज देयर, सरनेम इज सेम बट शी इज नॉट माय रिलेटिव।
Okay, she was holding the charge as a WHO technical officer, and it was purely her efforts that this day has seen the daylight through WHO, that is the World Patient Safety Day. और ये पिछले 2-3 साल से अब तो इसकी काफी प्रैक्टिस भी चल रही है, एंड मोर ओवर जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड on September 17 they mark this day with the orange light. तो दुबई में बुर्ज खलीफा की ऑरेंज लाइट जलती है, वर्ल्ड के न्यूयॉर्क में आपका जो कौन सी स्ट्रीट है मैनहट्टन में, तो वहां पे एक पूरा उनका भी एक पूरा वो बना हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस मोन्यूमेंट का, वहां पे भी लाइट जलती है, टाइम स्क्वायर। तो ये कई जगह ऑस्ट्रेलिया में भी, तो अब इस डे को मार्क किया जाता है September 17 को विद ऑरेंज लाइट फॉर द पेशेंट सेफ्टी डे. So from drug safety to patient safety. So now medication safety, it has become a part of patient safety. मतलब हमें ओवरव्यू में काम करना है. We have to ensure whatever medicine, whatever drug we are giving it to patient, that should not harm to the patient. तो इसलिए मेडिकेशन सेफ्टी उसका एक कंपोनेंट है. ओवरऑल जो अम्ब्रेला है वो क्या है? पेशेंट सेफ्टी. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेशेंट है that should stay in the center, and we require the patient centric approach. And why pharmacovigilance? First, do no harm. This is the Hippocrates oath that has been usually being given to the medical students. Even nursing वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे फार्मेसी के जो ग्रेजुएट्स हैं शायद इस ओथ से दूर रहते हैं, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं जाती. नर्सिंग का एक अलग रहता है, उनको जिस दिन ये लैब कोट की वेयरिंग करते हैं उस दिन उनको ये ओथ दिलवाई जाती है. मेडिसिन के जो एमबीबीएस के ग्रेजुएट्स हैं उनको भी दिलवाई जाती है. बट इंडिया में शायद हमारा एक पोटेंशियल ऐसा है कि वी हैव बिकम मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड. आफ्टर इंडिपेंडेंस फार्मासिस्ट दे हैव यूटिलाइज्ड देयर कैपेबिलिटीज, दे हैव यूटिलाइज्ड देयर रिसोर्सेज टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकेशंस. तो इसी वजह से हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं जो फार्मेसी प्रैक्टिस है या फार्म डी ओरिएंटेड जो करिकुलम है वो अभी भी बडिंग स्टेज में है. इट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन मेनी फार्मेसी इंस्टीट्यूट. अब तो पीसीआई इंसिस्ट कर रही है कि आप लोगों को रखिए जिनको फार्मेसी प्रैक्टिस की नॉलेज हो, बट स्टिल इट इज इन इनिशियल फेज और स्ट्रगलिंग फेज. बट वन पॉलिसी इज वेरी क्लियर, if you cannot benefit the patient, you have no right to harm the patient. That is what Hippocrates oath it is. अगर आप किसी भी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, अगर आपको उस मेडिकेशन की पूरी नॉलेज नहीं है, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट, उसके टॉक्सिक इफेक्ट, अगर उस ड्रग के ऊपर एज ए फार्मासिस्ट अगर आपकी कमांड नहीं है, देन यू आर प्लेइंग विद पेशेंट लाइफ. और ये चीज आपको समझने की भी जरूरत है कि इसीलिए बार बार टीचर आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप अपनी फार्माकोलॉजी को थर्ड ईयर फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़िए, थेरापेटिक्स को अच्छे से पढ़िए, ताकि जितनी आपकी ड्रग की नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी, कल को अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करके इफ यू बिकम ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो आपसे ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, चाहे वो फार्माकोविजिलेंस की हैं, चाहे वो मेडिकेशन सेफ्टी की हैं, चाहे वो पेशेंट सेफ्टी की है. तो आपकी जो नॉलेज है दैट इज गोइंग टू help you. Okay. And why pharmacovigilance? First of all, it is a humanitarian background. जो भी काम हमें करना है अच्छे से करना है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी पेशेंट का नुकसान हो. देन इकोनॉमिक बर्डन टू सोसाइटी. कोई भी ड्रग अगर अपना एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को होती है, अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या उसको उस साइड इफेक्ट या उस एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए अगर मेडिकेशन लेनी पड़ती है, so then it is going to put the economical burden to the patient as well as his family and in whole to the whole society. वो चाहे आयुष्मान भारत से पैसा आए, चाहे गवर्नमेंट की किसी और स्कीम से पैसा आए, तो वो जो मनी है that is going to create a burden on the society. Then promoting rational use of medicines and adherence. Then ensuring public confidence. Ensuring public confidence का कहीं ना कहीं मैं ये बात कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट को अभी लोग उस नजर से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. द रीजन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग आवर फुल सर्विसेज टू द कम्युनिटी. और सैड पार्ट मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं कि मेरे बड़े ऐसे कलीग्स होंगे जो जूनियर फेलो फार्मासिस्ट हैं, जो पास आउट हैं, जो रेंटल लाइसेंस दिए हुए हैं. तो जब आप फार्मेसी में है ही नहीं और रेंटल दे रहे हैं, देन इट इज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 10वीं पास लड़का क्या डिस्पेंस तो क्या करेगा, वो क्या सेल करने वाला है. समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसी से ही एसोसिएट है.
देन सेफ्टी इंफॉर्मेशन बिफोर ए मेडिसिन इज पुट ऑन द मार्केट। तो उसमें आपको तो पता है प्री क्लिनिकल में मतलब जो चलता है, पहले तो एनिमल टेस्ट चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज चलती हैं, देन द क्लिनिकल ट्रायल्स। और एनिमल्स के अंदर कोई भी ड्रग जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है तो ये सब स्टडीज पहले एनिमल्स पर होकर आती हैं, स्मॉल एनिमल्स पर, वो चाहे एक्यूट टॉक्सिसिटी हो, चाहे ऑर्गन डैमेज हो, चाहे आपकी डोज डिपेंडेंस हो, चाहे मेटाबॉलिज्म, काइनेटिक्स, कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी, स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इन डिटेल, बट बीइंग ए फार्मेसी स्टूडेंट आपको ये चीजें फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में सब पढ़ने की जरूरत है। जितनी भी प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं यू हैव टू गो थ्रू एज ए पार्ट ऑफ योर फार्माकोलॉजी कंपोनेंट। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में मैं नहीं जाऊंगा, ट्रायल वाइज है। फेज 3 में चेकिंग फॉर द सेफ्टी है, फेज 2 में चेकिंग फॉर एफिकेसी है, फेज 3 में कंफर्म फाइंडिंग्स इन कंपैरेटिवली लार्ज पॉपुलेशन है। Then phase 4 is the testing long-term safety in diverse patient population। और जो फार्मा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस है बेसिकली वो फेज 4 ही है, जब when the drug enter into the market और उसके जो इफेक्ट है लार्जर पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए फेज 1 क्या है, उसमें पॉपुलेशन साइज कितना है, किस चीज को हम मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली फिर फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। और ये उनकी लिमिटेशंस नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ डिफरेंस है। आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इन डिटेल, बट हमें जो फोकस करना है इस पर्टिकुलर स्टेज पे फेज 4 है, दैट इज द पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस और फार्माको विजिलेंस। और ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी जो है, अगर आप देखा जाए फार्माको इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स की, तो जो इंटरनेशनल डिफरेंसेस हैं बिफोर द ड्रग एंटर इनटू द मार्केट, क्लिनिकल ट्रायल्स में किस तरह के रिजल्ट हैं और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में कहाँ गैप आ जाते हैं। एक तो जेनेटिक बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है, सोशल बेस पे आ जाते हैं, कल्चरल बेस पे आ जाते हैं, डिजीज की प्रेवलेंस के स्टाइल में आ जाता है। इंडिया में पैटर्न अलग चल रहा है, यूएस में अलग चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अलग चल रहा है, यूरोपियन पॉपुलेशन में अलग चल रहा है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इंडिया का भी जो फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम है वो इसी तर्ज पे शुरू हुआ है जेनेटिक को लेके। आपको निमोसलाइड ड्रग का आप नाम सुने हैं? सुने हैं ना? ये एक वो ड्रग थी जो प्रोबेबली आई थिंक इट वाज इन 99, 97, 98, 99 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन मार्केट बाय पेनिशिया बायोटेक बाय ए ब्रांड नेम निमोलिडेमडी। ठीक है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। निमोसलाइड किस कैटेगरी की ड्रग है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? नसेट्स क्या है? नसेट्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। उसमें किस तरह की क्लासिफिकेशन है? कॉक्स 1, कॉक्स 2 सुने आप? ये क्या कॉक्स 1 है? कॉक्स 1 में क्या है? व्हाट इज कॉक्स? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो ये क्या है कॉक्स 1? चलो पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। तो निमोसलाइड जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी तो एज ए कॉक्स 1 इनिबिटर हुई थी, ठीक है। तो ये कंपनी की तरफ से अच्छा क्लेम था कि ये ड्रग इतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं करती जितनी बाकी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग करती है। और जो निमोलिडेमडी एक पर्टिकुलर ब्रांड था, इट वाज ए हॉट सेलिंग केक फॉर द पेनेशिया बायोटेक इन दोज डेज। ये 100 करोड़ से ऊपर का ब्रांड था उन दिनों में। एंड वन फाइन डे this particular molecule nimesulide it started creating problem in the other part of the world, US, Europe। उससे ये information वहां से डाटा आने लगा कि this particular drug it induces hepatotoxicity। मतलब ये लीवर को प्रॉब्लम करती है। एडल्ट पॉपुलेशन में तो करती है, इवन पीडियाट्रिक में भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब ये इंफॉर्मेशन आई तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो रेगुलेटरी एजेंसीज है उनके पास भी आई, ओके, एंड दे बैन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ओवरनाइट।
पेनिशिया जैसी कंपनी को ये बहुत जबरदस्त झटका लगा कि जब ये मॉलिक्यूल रातों रात नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ जाएगी, आपका फलां फलां मॉलिक्यूल अब बैन ही किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर नो लॉन्गर टू सेल दिस मार्केट इनटू इंडियन मार्केट। मामला कोर्ट तक गया, स्यू किया उसने, पेनिशिया बायोटेक ने। बात जजेस के सामने आई, पैनल के आगे आई। तो जजेस की उनके जो पेनिशिया बायोटेक के जो वकील थे, जो केस की पैरवी कर रहे थे, एडवोकेट्स, लॉयर्स, तो उन्होंने पूछा जी हमारी इन्होंने जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है इसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पे आके पड़ा है कि ये ड्रग ही हमारे के मार्केट में बैन हो गई और हमारे पास तो स्टॉक ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है, मतलब हमारे वेयर हाउस में, तो हम इसका क्या करेंगे। एंड मोर ओवर हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका जेनेसिस क्या है, बेस क्या है गवर्नमेंट के पास। तो फिर सरकारी वकील ने बात रखी जी ये देखिए मतलब कि ये जो डाटा है इसका जो आ रहा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन, वो सारी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि दिस ड्रग इंड्यूसेस हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो पेनिशिया बायोटेक ने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप हम कोई ड्रग इसको यूएस मार्केट में तो नहीं सेल कर रहे, हम तो जो भी कर रहे हैं इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, हम यूरोपियन मार्केट में भी नहीं भेज रहे, तो आप हमें इंडिया का डाटा दिखाइए कहाँ है, तो जो आप बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आप ये देखिए कि गवर्नमेंट के पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि जो ये प्रूव कर सके कि उस टाइम हमारी जो पॉपुलेशन 1.1 या 1.2 बिलियन थी उसके रेलेवेंट वो डाटा प्रोड्यूस कर सके कि ये ड्रग इंडियन पॉपुलेशन में सच में हार्म कर रही है या नहीं कर रही। दिस इज हाउ उसके बाद जजेस को पूरा एक अच्छे से अपनी वो देनी पड़ी, क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट। और गवर्नमेंट को भी ये इंटीमेट करना पड़ा कि ये जो इस केस के बेस पे हम आपको ये बड़ा मतलब आगाह करते हैं कि नेक्स्ट टाइम फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स यू क्रिएट योर ओन सिस्टम। पूरी फार्माकोविजिलेंस की जो मॉनिटरिंग है वो इंडिया अपनी खुद करे रेदर देन टेकिंग डाटा फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ओके, तो देन दे स्टार्टेड, this is how Indian pharmacovigilance came into picture. This is how India created a setup for the pharmacovigilance monitoring. This is how AMCs, regional monitoring centers, national monitoring center, they came into picture. और रोल एंड नीड फॉर द इंफॉर्मेशन, हेल्थ अथॉरिटीज टू मॉनिटर, तो उसमें कहीं ना कहीं मेडिसिन ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी, मेडिसिन सुटेबल फॉर इंटेंडेड पर्पज, देन मेडिसिन यूज्ड रैशनली, देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के व्यू पॉइंट से नीड फॉर अपडेटिंग ड्यू टू इवॉल्विंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, देन एज वेल एज थेरेपेटिक ऑप्शंस एंड एसेंशियल कम्युनिकेशन लूप फॉर ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें मुझे लगता है सभी का कहीं ना कहीं फार्माकोविजिलेंस में सिग्निफिकेंट रोल है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट, मैन्युफैक्चरर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, देन हेल्थ केयर अथॉरिटी. So these are the key players who have to play a significant role in pharmacovigilance. I cannot go in detail because I've been given limited time, but ये सभी लोग हैं जिनको, सभी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको फार्माकोविजिलेंस में they have to play a significant role. और उसमें भी जो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, द अलर्ट और पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल कनेक्ट्स एन अनडिजायरेबल मेडिसिन इवेंट विद ड्रग एक्सपोजर एंड ए सस्पिशन इज क्रिएटेड। जो हम लोग करते हैं एडीआर की मॉनिटरिंग, जो आईसीएसआर की फिलिंग करते हैं इंडिविजुअल केस रिपोर्ट्स की, वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम का ही पार्ट है। और ये जो रिपोर्ट है इट गोज टू फार्माकोविजिलेंस सेंटर। or WHO definition for counterfeit medicine, basically a product that is deliberately and fraudulently mislabeled with respect to source and or identity. And counterfeiting can apply to both generic as well as the branded products. And counterfeit products may include product with the correct ingredients, with the wrong ingredients, without ingredients, with incorrect quantities of active ingredients, or with fake पैकेजिंग। काउंटरफीट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इन डिटेल, बट व्हेन इट कम्स टू फार्माकोविजिलेंस वी हैव टू मॉनिटर फॉर द काउंटरफीट मेडिसिन्स आल्सो। ओके, और इसमें भी मैं कई बार देखता हूँ कुछ एक सिलेक्टिव ब्रांड, अब तो कुछ एक कंपनीज क्यूआर कोड के साथ आ गई हैं, अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो वो डायरेक्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले जाता है, वहां से ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है। लेकिन पटना की मार्केट में कुछ मोस्ट सेलिंग ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा उन ब्रांड्स की, लेकिन उनकी काउंटरफीटिंग मुझे यहाँ दिखती है। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो आपको किसी XYZ किसी और ही साइट पे वो ले जाता है। मतलब जो फेक मेडिसिन बना रहे हैं वो फेक क्यूआर कोड भी अब जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, समझ रहे हैं? वो कंपनी की साइट पे नहीं जाता, वो कहीं और ही चला जाता है, कुछ और ही जाके खुल जाता है।
So we have to be very very careful. ये बहुत बड़ा एक separate topic है, but I am not going to go in detail. But it is a part of pharmacovigilance monitoring. और आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कल को अगर आप फार्मेसी रन करें, चाहे हॉस्पिटल है चाहे कम्युनिटी है, यू प्लीज मेक श्योर कि जो आपके पास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉपर बिल के ऊपर भी प्रोडक्ट आ रहा है होलसेलर के पास या रिटेलर के पास, प्लीज इंश्योर थ्रू QR कोड। कई बार मेन सप्लाई चेन के अंदर भी काउंटरफिट ड्रग्स आ रही हैं। मतलब आप ये सोच के मत इंश्योर कीजिए कि मैंने तो होलसेलर से मंगवाया, मैंने तो ये आइटम बिल पे मंगवाई है, मेरी तो आइटम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आई है। नो, आई एम टेलिंग यू, कई बार मेन सप्लाई के अंदर भी काउंटरफिट के मैकेनिज्म बन गए हैं। आई डोंट नो हाउ इट इज एंटरिंग इनटू मेन सप्लाई, लेकिन मेन सप्लाई के अंदर भी पटना जैसे शहर के अंदर आपको काउंटरफिट देखने को मिलेगा। ब्रांड नेम आई कैन नॉट स्पीक पब्लिकली, बट आई हैव ऑब्जर्व। टाइप ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स अफेक्टेड बाय काउंटरफिटिंग, ये सारे प्रोडक्ट वो हैं जो मतलब काउंटरफिट के दायरे में, जिनका हाई वॉल्यूम है, जिनकी सेल बहुत ज्यादा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज्यादा है या जिनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, या फिर जो लाइफस्टाइल ड्रग्स हैं या नॉन रिम्बर्स्ड है, मतलब सरकारी क्लेम में रिम्बर्स नहीं है लेकिन वो लाइफस्टाइल में है, प्लेजर के लिए यूज हो रही है सोसाइटी में किसी और वन और अदर प्लेजर के लिए। then blockbusters, then parenterals, then all generics, off-label use drugs, drugs in short supply. ये सारी एक टाइप्स हैं जो काउंटरफिट के लिए हाईली एंटाइटल्ड हैं, जो किसी भी काउंटरफिट मेडिसिन बनाने वाले को अट्रैक्ट कर सकती हैं। Then pharmacovigilance during COVID. I'm skipping this slide now. COVID up to anyway, because I was running short of time. So challenges and way forward, strategic plan to reduce preventable ADR. तो वो तभी होगा जब pharmacists they will be good enough competent, और वो तभी होगा जब आप एज ए स्टूडेंट when you make a command on your subjects like pharmacology, therapeutics, इन सब्जेक्ट्स को आप जितना पढ़ेंगे जितना समझेंगे, then only you will be able to perform those duties. और अगर स्ट्रेटेजिक डाटा में भी अगर मैं वैसे बात करूं तो अगर WHO का डाटा देखा जाए तो 45% ADRs आर प्रिवेंटेबल इन नेचर। ये डाटा वो है जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहा है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज से आ रहा है, लेकिन जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके अंदर तो अभी डाटा है ही नहीं। और मेरे हिसाब से यहाँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रेट और भी ज्यादा होगा। हमारा तो अभी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही, बट एवरी सिंगल डे one or other drug at every home, every other patient, they are facing one or other ADR. और दूसरी स्टडीज में 58%. So patient awareness and their adverse events reporting to PVPI and MVPI addressing through National Pharmacovigilance Week, that may be the one method for creating awareness. और then medicines lack efficacy or poor quality reporting to pharmacovigilance, जो इंटरनेशनल स्टेटस है और जो इंडिया का स्टेटस है उसमें भी बहुत गैप आ रहा है। हमारी जो ड्रग्स की जो क्वालिटी है दे आर नॉट अप टू मार्क। और इसका तो मतलब मैंने आई स्टेड इन ए फॉरेन कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 8 years। वहां अगर मैं 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम अगर एबुप्रोफेन भी लेता था एडविल तो उससे सिरदर्द ठीक हो जाता था। यहाँ आने के बाद अगर मैं कॉम्बीफ्लेम भी ले लेता हूँ जिसमें एबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम प्लस 325 मिलीग्राम पैरासीटामोल है, तब भी सिर दर्द ठीक होने में कई बार 1-1.5 घंटा ले लेता है। तो क्वालिटी का आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, देयर इज ए ह्यूज चेंज। उसमें भी कई स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं जिनके मैं पब्लिकली अभी नेम नहीं ले सकता। इवन इन एंटीबायोटिक्स देयर इज ए बिग डिफरेंस व्हेन यू कंपेयर द एफिकेसी ऑफ दोज एंटीबायोटिक्स when you take that medicine in some foreign country and when you take it from the Indian market. Not only the local manufacturer, I'm talking about the multinational companies, they are not able to maintain their quality. That is again a separate issue. But we pharmacists, we have to be very careful when we are dispensing the drugs. We have to be very suspicious, and we cannot close our eyes by simply saying this drug is coming from XYZ multinational, ये तो ठीक ही होगी, ये तो ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन का प्रोडक्ट है, ये ठीक ही होगा, ये तो फाइजर का है, ये ठीक ही होगा, या ये नोवार्टिस का है, ये तो ठीक ही होगा। नो, ये सिप्ला का है, ठीक ही होगा। नो, समझ रहे हैं? पेशेंट जो बोल रहा है, पेशेंट जो आपके आगे बात रख रहा है मेडिसिन लेने के बाद, ट्राई टू लिसन टू हिम। बात को काटना नहीं है, उसकी बात को सुनना है, समझना है। कोई भी ब्रांड इंडिया के अंदर सिक्योर नहीं है। रीजन उसके पीछे काउंटरफिट भी हो सकता है, रीजन उसके पीछे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी भी हो सकती है।
अब बात समझ रहे हैं? आई थिंक आई एम नॉट गोइंग, पीबीपीआई का इम्पैक्ट है, कुछ एक अच्छी पब्लिकेशन अब अलग अलग जगह से आने भी लगी है, डाटा जनरेट होने लगा है एडीआर को लेके, एंड आई थिंक दैट इज द वन पार्ट ऑफ माई स्लाइड. नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंपोनेंट. दूसरा जो है दैट इज ऑन वीजी फ्लो. इसका जो एडीआर का आप एक फॉर्म देखे है ना, ये आपकी जो हैंडबुक है, ये आईपीसी का, इंडियन फार्माकोपिया, हो सकता है मॉर्निंग में डॉक्टर क्लाइस एलवन ने भी शो किया हो. ये भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से एक पूरा एडीआर का रिपोर्टिंग फॉर्म है. अगर कल को जाके अगर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं या किसी क्लिनिकल फैसिलिटी में अगर आपको ट्रेनिंग का मौका मिलता है, तो आप एडीआर का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रिपोर्ट इट टू अस. वो डाटा हम वीजी फ्लो में एंटर करेंगे और ये डाटा आगे आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को जाएगा, और वहां से, बिकॉज दैट इज ए नेशनल डाटाबेस, वहां से फिर ये आगे डाटा उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, यूएमसी उपसाला, चला जाएगा ग्लोबल सेंटर में. ठीक है, तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं 2 पेज का, क्योंकि यहाँ से हो सकता है इतनी क्लैरिटी आपको ना बने, तो आप ये फॉर्म अपना निकाल के इसको रीड कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स. और ये जो वीजी फ्लो है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नो, यूएमसी उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर से है. बेसिकली इट इज ए सॉफ्टवेयर. जैसे आप गूगल फॉर्म भरते हैं ना, वैसे ही ये डाटा एंट्री फॉर्म है. और अगर ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक्स थिंग. पेशेंट की इंफॉर्मेशन क्या है, ड्रग की इंफॉर्मेशन क्या है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, किस तरह के एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें है. बट इट इज ए वेब बेस्ड सिस्टम. VGFlow is a web-based tool developed by the Uppsala Monitoring Center for collecting, managing and analyzing adverse drug reaction reports. Purpose इसका मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ. It is designed to assist national pharmacovigilance centers across the world. समझ रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री इज ए सिग्नेटरी मेंबर. WHO की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी इसी पे साइन किए हुए हैं, और काफी कंट्रीज से डाटा जा रहा है. और इंडिया की तरफ से पॉपुलेशन साइज को देखें तो अभी भी हमारी तरफ से बहुत अंडर रिपोर्टिंग है व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर पॉपुलस कंट्री लाइक चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. अगर हम अपने पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अभी भी इंडिया की तरफ से इतना डाटा उपसाला को नहीं जा रहा जितना हमारा पॉपुलेशन साइज है, 1.4 बिलियन. It is designed to assist national pharmacovigilance centers in effectively managing adverse drug reaction data. VGFlow basically collects, processes and share ADR reports. It supports regulatory authorities, healthcare professionals and pharmaceutical companies. Then it contributes to global databases like VGBase to identify safety signals. और ये फॉर्म मैं आपको शेयर कर चुका हूँ. इस फॉर्म को आप पढ़िए, आपको हर कंपोनेंट बड़ा क्लियरली समझ आएगा. मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इस फॉर्म में कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको ना समझ आए. और बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट हैं. फर्स्ट कंपोनेंट है पेशेंट इंफॉर्मेशन के रेलेवेंट. सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज विद रिगार्ड टू द सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन. देन सस्पेक्टेड मेडिकेशन, जो मेडिकेशन उसमें इन्वॉल्व है. देन द फोर्थ वन इज द रिपोर्टर डिटेल्स. और ये एक केस स्टडी है जो स्टूडेंट ने रिकॉर्ड में ली है, हमारे वाले स्टूडेंट ने. अभी अशोक यहाँ खड़ा ही है. सो बेसिकली इट इज a case of 42-year-old female patient who was admitted to a hospital with a complaint of pain in the abdomen, and the patient was diagnosed with gallbladder cancer, and after administration of gemcitabine the patient experiences anemia. तो कीमोथेरेपी में अलग अलग जो साइकिल चलते हैं, महावीर कैंसर से हमारा जो डाटा रहता है. और वैसे भी एनीमिया में भी बिकॉज ऑफ डिजीज ऑल्सो, इट मे बी मेनी टाइम ड्यू टू ड्रग ऑल्सो, बट इन दिस पर्टिकुलर केस I think that this is just he has given for the drug. The patient did not have any family history of cancer. और जो relevant investigation थी वो था अनीमिया, और उसका जो हीमोग्लोबिन पेशेंट का लेवल था 8.9 ग्राम पर डेसीलीटर. Similarly, this data he has entered into the patient report form. ये आप देख रहे हैं सस्पेक्टेड एडीआर, ये पेन से फिल हुआ हुआ है. उसका जो सारा कंपोनेंट उसने यहाँ स्टूडेंट ने फिल किया हुआ है. ठीक है. तो टुमारो इफ यू एंटर इनटू प्रैक्टिस, अगर आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ऐसे ही आपको भी रिपोर्ट बना के फिल करनी है. पेशेंट की एज, पेशेंट किस पर्पज के लिए हॉस्पिटल में आया, क्या उसका डायग्नोज हुआ, उसके बेस पे क्या ट्रीटमेंट दिया गया, और कौन सी ड्रग सस्पेक्टेड है. ठीक है. मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, सस्पेक्टेड.
आपको कंफर्म नहीं है, अगर आप सस्पिशियस भी हैं तो भी एडीआर फॉर्म फिल करिए, क्योंकि आप ये देखिए कि ऑल ओवर इंडिया डाटा गाजियाबाद जाता है आईपीसी। अगर मुझे डाउट था पटना में बैठ के कि गेमसिटाबिन ये पर्टिकुलर ड्रग एनीमिया इंड्यूस कर सकती है, बीइंग ए फार्मासिस्ट देयर इज ए पॉसिबिलिटी, या तो है मुझे 100% श्योरिटी है, अगर मुझे श्योरिटी नहीं भी है, अगर मैं 10% भी सस्पिशियस हूं तो भी मुझे फॉर्म फिल कर देना चाहिए। द रीजन इज क्योंकि जो वो ऊपर आईपीसी गाजियाबाद के पास तो पूरी दिल्ली पूरी इंडिया से डाटा जा रहा है ना, उनके पास तो तमिलनाडु से भी आ रहा है, केरला से भी आ रहा है, बेंगलोर से भी आ रहा है, लखनऊ से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, कश्मीर से भी आ रहा है। तो वो जब दिल्ली बैठ के या गाजियाबाद बैठ के जब वो देखेंगे डाटा तो उनको अंदाजा लग जाता है कि वाकई ये ड्रग कल्प्रिट है या नहीं है। लेकिन आपको जरा सा भी सस्पिशियस है, अगर आप जरा से भी सस्पिशियस है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं है, आपका कोई भी रोल नहीं है, आपका काम सिर्फ रिपोर्ट करने का है, एनालाइज करने का काम ऊपर लोग ट्रेंड बैठे हुए हैं और उनके पास भी पूरी ट्रेनिंग है, और उनको भी ऊपर से अगर सिग्नल जनरेट करवाना है तो उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर से भी वो फीडबैक ले सकता है इंडिया, कि इंडिया के अंदर हमें गेमसिटाबिन से फॉर एग्जांपल इस तरह की रिपोर्टिंग आ रही है, क्या ये पैटर्न यूएस में देखने को मिल रहा है आपको, क्या ये पैटर्न आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, क्या ये पैटर्न आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, या हमारी जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, श्रीलंका है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप अगर जरा से भी सस्पिशियस है आप रिपोर्ट करिए। और मैं फिर बता रहा हूं, जो रेयर एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो अक्सर उसमें कभी भी 100% कंफर्मेशन होगी नहीं फर्स्ट इंस्टेंस में। जो रेगुलर रिपोर्टिंग है, एसी इनहिबिटर इंड्यूस कफ सबको पता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सरेशन सबको पता है, लेकिन जो रेयर साइड इफेक्ट है वो रेयर ही मिलते हैं। उसमें जो रिपोर्ट कर रहा होता है वो हार्डली 5% ही सस्पिशियस होता है या 10% सस्पिशियस होता है, लेकिन जब ग्लोबल डाटा वेरी होता है, मैच होता है, तो वहां से सिग्नल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको कंफर्म होने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़े से भी सस्पिशियस हैं तो आप रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन करने का काम ऊपर आईपीसी गाजियाबाद का है, ये यूएमसी उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर का है। सिमिलरली दिस इज अनदर केस फॉर जोलेड्रोनिक एसिड का है, कॉन्स्टिपेशन का। I'm not going to go much in detail, but in similar manner, this report has to be filled. And this is the third case for cisplatin. उसमें भी anemia reported है with the drug cisplatin. That is another anti-cancer drug. और हमारा काफी डाटा जो है वो कैंसर हॉस्पिटल से ही आता है, तो हमारे पास इस तरह की काफी रिपोर्टिंग कैंसर ड्रग्स की रहती हैं। और ये अगर ऑनलाइन है तो अगर आप दिखा सकते हो शो, अभी भी डाउन है सर्वर। आज आईपीएस का जो यूएमसी का सर्वर डाउन है लॉगिन का, नहीं तो मैं आपको शायद लाइव डेमो दे देता, बट मैंने इसके स्नैपशॉट लिए हैं। यू हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी एंड द गिवन पासवर्ड। ओके, ये एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, जस्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, हालांकि अभी आपके पास राइट नहीं है। अगर आप कोई भी एडीआर कलेक्ट करके हमें भेजते हैं तो आगे जो हमारे जो एमफॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस के जो स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो ये डाटा आपसे कलेक्ट करके लॉगिन पेज पे जाएंगे यूएमसी के, एंड दे विल स्टार्ट फिलिंग द डाटा। लो, हमारे पास पासवर्ड और इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ है, और उसमें जाने के बाद फिर इसका जो डाटा है, इसमें एक जगह पे आके ये लिखा हुआ है कि न्यू आईसीएसआर, जो इंडिविजुअल केस रिपोर्ट है ड्रग की, यहाँ पे आप टिक करिए और यहाँ पे उसमें ये फॉर्म खुल जाएगा आईसीएसआर का। ठीक है, तो इसमें वो जो आपके फॉर्म में है, जैसे रिपोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, क्या आपकी रिपोर्ट है, क्या उसमें वो इन्वॉल्व है, देन रिपोर्ट टाइप किस तरह की है, वेदर इट इज ए स्पॉन्टेनियस ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग है या किस तरह की रिपोर्टिंग है, वो आपका हो गया। देन उसके बाद नीचे वाला जो किस डेट को रिपोर्ट रिसीव हुई है उसकी इंफॉर्मेशन सारी आपकी, और उसके बाद नीचे रिपोर्टर की सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, रिपोर्टर की क्वालिफिकेशन, उसका क्या टाइटल है, सरनेम क्या है, किस कंट्री से, बिकॉज इट इज ए ग्लोबल डाटाबेस। तो आपको रिपोर्टर पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, देन द रिपोर्टर की सारी इंफॉर्मेशन हमें आपके एडीआर फॉर्म से मिल जाएगी। उससे फिर ये आईडी जनरेट हो जाएगा उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर का, उसको हम सेव करते हैं और उससे ये उसी की ही कंपोनेंट है। और ये देखिए, ये जो आईडी है ये इसका जनरेट हुआ है, वंस यू सबमिट सेव इट। ओके,
और इसके जो सेक्शन है दैट यू कैन सी, वन इज द रिपोर्ट की पूरी इंफॉर्मेशन का सारा कंपोनेंट आपके एक तरफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड पे जो अनसेफ जो उसका आईसीएसआर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इसमें रहेगी। और नेक्स्ट सेक्शन इज द विद रिगार्ड टू द पेशेंट, स्टेप बाय स्टेप जो बुलेट मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाए हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। पेशेंट का आ गया, देन केस का पूरा नरेटिव हो जाएगा, वो आपका एक स्लाइड पूरा खुलेगा, उसमें आपको केस का नरेटिव एंटर करना है, पेशेंट का जो स्टार्टिंग में मैंने आपको नरेटिव दिखाया था ना वो। देन पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करने हैं, वो उसमें दिए हुए हैं पेशेंट रिपोर्टिंग फॉर्म में, वो सारा वहीं से हम डाटा लेंगे। और उसके बाद ड्रग की जो हिस्ट्री है पेशेंट जो ले रहा है विद रिगार्ड टू द पेशेंट, नॉट विद रिगार्ड टू द ड्रग हिस्ट्री इन द मार्केट, ओके। और उसके बाद फील्ड्स अवेलेबल इन द रिएक्शन, अब उसमें उस पर्टिकुलर ड्रग से क्या रिएक्शन हुई है पेशेंट को, उसका सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में फिल करना है, ठीक है। और इसमें जब आप इनिशिएटिव लेंगे, हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम आए, और इस स्टेप पे तो मेरे लिए भी आसाना बताना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर आप में से किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो आई एम रेडी टू कनेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स हु विल मेक यू ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो वो आपको डाटा एंटर करने में, डाटा एडीआर फॉर्म फिल करने में हेल्प कर देंगे, जहां कहीं इनएक्यूरेसी है तो दे विल आल्सो हेल्प यू टू करेक्ट, ओके। और ये उसी की जो मेट्रा टर्म है, जो स्टैंडर्ड जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टर्म्स हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट टेकिंग दिस सॉफ्टवेयर, इट विल स्टार्ट पिकिंग दोज टर्मिनोलॉजीज, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी रिटेंशन है, एनीमिया है, जितनी भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी। ये देखो रिटेंशन यूरिन, रिटेंशन यूरिनरी, यूरिनरी, तो वो सारा यूरिनरी रिटेंशन पोस्ट, काफी टर्मिनोलॉजीज अब इसकी मेड्रा के बेस में हैं। तो आप एक बार जस्ट टाइप करेंगे तो जो आपके रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी रहेगी वो आपको उसके पेशेंट के हिसाब से, रिएक्शन के हिसाब से यू विल बी एबल टू गेट इट। देन एडिंग इफ इट इज मोर देन वन रिएक्शन तो एडिशनल रिएक्शन के बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। अगर सेम पेशेंट में अगर आपको 2 रिएक्शन एट ए टाइम देखने को मिल रही हैं या आप सस्पिशियस हैं, ठीक है, तो आप दोनों भी फिल कर सकते हैं। और उसमें उसके बाद उसकी जो सीरियस एंड सीरियसनेस उसका जो नेचर है, तो इसमें स्केल भी वही लग जाएगा ना रेनरेंजो, तो उसकी जो काजलिटी असेसमेंट का जो स्केल है वो इसमें लग एट लास्ट, अच्छा लास्ट में रहेगा। लेकिन इसमें सीरियसनेस और उसके जो उसके ड्रग के जो रिएक्शन के जो नेचर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, सीरियसनेस को। और उसका जो आउटकम का जो लेवल है वो आपको बताना पड़ेगा, फॉर ईच रिएक्शन उसका फाइनल आउटकम उसका क्या रहा, यही है ना आउटकम को लेके, पेशेंट की रिकवरी हुई या पेशेंट को किस तरह की कॉम्प्लिकेशन बाद में देखने को मिली, वो आपको उसका देखना पड़ेगा। एंड दीज आर द फील्ड्स अवेलेबल इन द, कौन को उस अब ड्रग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, मतलब जो सस्पिशियस ड्रग है उसके सारे डिटेल्स, मैन्युफैक्चरर कौन है, ड्रग की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैच नंबर क्या है, लोट नंबर क्या है, ड्रग की एक्सपायरी डेट क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी फिल कर दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कॉलम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म ये नहीं कहता कि आपको पूरी 100% इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बेस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर पाए। और अगर इफ इट इज मोर देन वन ड्रग है तो आप बाकी ड्रग्स के डिटेल भी फिल कर, अगर आप एक ड्रग की बजाय मल्टीपल ड्रग पे सस्पिशियस हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये 2-3 में से कोई एक ड्रग हो सकती है, तो यू फिल द डिटेल ऑफ ऑल 3-4 ड्रग्स, जितनी भी उस प्रिस्क्रिप्शन में है सबके डिटेल आप फिल कर सकते हैं। एंड दिस इज टेस्ट एंड प्रोसीजर सेक्शन, अकॉर्डिंगली कौन कौन से टेस्ट उस पर लैब टेस्ट परफॉर्म हुए हैं उसके डिटेल्स, देन टेस्ट के क्या रिजल्ट्स आए हैं लेबोरेटरी से वो हो गए, पेशेंट पे जो भी लैब इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनकी फाइंडिंग्स, देन दिस इज द कॉजलिटी असेसमेंट मैट्रिक्स, वो यहाँ से क्लियर। और ये पेरेंट चाइल्ड रिपोर्ट ये सेपरेट कॉलम रहेगा, अगर पेरेंट चाइल्ड का कुछ कंपोनेंट है तो चाइल्ड के रिपोर्ट आप यहाँ पे, फीटस के लिए अलग से सेपरेट सेक्शन है, ये ना। I think this is same. Now this is the same. Okay. फर्क इतना है कि now it is in the case of child. अब ड्रग को लेके. So I think that's all. Thank you.
Thank you, sir, for this informative session. Now I would like to ask anyone having question, any two question. Any student is having question? Okay, thank you, sir. So next, we will proceed for our next session, which is going to be signal detection in pharmacovigilance. The lecture will be given by Dr. Krishna Undela from NIPER Guwahati. I will request Dr. Suhani Sinha ma'am to introduce Dr. Krishna Undela sir. And Dr. Undela sir will join us through online. Meanwhile, Dr. Undela sir join us. I would like to request Ravindra Lal Bandyopadhyay sir from IPA to come up on the stage, and I will request Dr. Suhani Sinha ma'am to please felicitate him. Mr. Ravindra Lal Bandyopadhyay is the secretary of the from IPA from the Bihar state. Thank you, sir, for your presence. Now, we would like to proceed for our next scientific session. I would like to request Dr. Suhani Sinha ma'am to introduce Dr. Krishna Undela sir. Hello.
Sir, are we audible, sir? Yeah, I can hear you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, so welcome all of you to yet another enlightening session in knowledge management and knowledge session, sharing session hosted by Naipar Hajipur for this week-long celebration of Pharmacovigilance Week. We have with us Dr. Krishna Undela, Assistant Professor, Department of Pharmacy Practice, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Naipar, Guwahati, with us today now. So he is going to address you on this day. His brief background includes he completed his M.Pharm pharmacy practice from the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali, Naipar Mohali in 2012, and his PhD from JSS Academy of Higher Education and Research, Mysuru in 2019. Dr. Krishna Undela also has expertise in conducting systematic reviews and meta-analysis and has published papers in various peer-reviewed reputed journals. These are well cited. Currently, there are more than 110 scientific publications to his credit. The total citations of his publications are 1350 plus, with an H index of 16 and an I-10 index of 22. He delivered over 170 lectures at various national and international conferences on pharmacoepidemiology, pharmacovigilance, pharmacoeconomics, clinical pharmacy, and systematic review and meta-analysis. Dr. Krishna Undela is currently a coordinator of the International Society of Pharmacovigilance South Asian Chapter, member of ISPE's Asian Conference and on Pharmacoepidemiology, International Steering Committee, coordinator of the Adverse Drug Reaction Monitoring Center, Atal Incubation Center, and BioNest at Naipar, Guwahati, and there are many more credits, laurels achieved by Dr. Undela. So may I please request him to start his seminar lecture. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much for the kind introduction. Hope you all can hear me properly. Can you please confirm once? You're able to hear me, right? Yes, you're audible, sir. Yeah. Sure. Thank you. So welcome you all for this lecture in today's afternoon. We are going to celebrate today the National Pharmacovigilance Week, the fourth one. Continuously, we are celebrating by the PVPI, especially the Pharmacovigilance Program of India. And welcome you all for this today's very interesting and very important as well, the pharmacovigilance webinar. And so just to brief you about the PVP, I think more from morning, you could have heard from the various interesting lectures, like the experts were there. They could have explained you about the pharmacovigilance and then PVPI, the contribution of pharmacovigilance program of India, in terms of pharmacovigilance in India, what exactly they're doing from the past 14 years, from 2010 onwards, how it is going. Hope you had some basic understanding about pharmacovigilance. And today in the afternoon, we are going to discuss one more important topic. I can say it is more advanced topic. Advanced topic in the sense we are going to understand something called signal detection. I'm not sure how many hear the terminology called signal detection in pharmacovigilance. It's an advanced topic. So let's see, it is not that I'm going to explain to you everything about signal detection in this one class, that too virtually. It is practically not possible. But I'll try to make you understand what is meant by signal detection in pharmacovigilance and what we're going to do there, and some basic calculations, what we can perform in terms of signal detection. Okay, so that's what mainly we are going to focus in this afternoon about the signal detection lecture. Give me some time, I can share my screen. Can you please confirm you can able to see my screen with the presentation? Yes? Yes, sir. Screen is visible. Yeah, great. Thank you.
So signal detection in pharmacovigilance, mainly there are two types. We are going to have a qualitative and quantitative methods. And in this lecture, we are going to mainly focus on quantitative methods. The quantitative in the sense we are going to calculate them. We have some formulas, we are going to use them and do some calculation and try to identify the signals, right? That's what we are going to do basically. And the qualitative one, I'm not focusing here. There is so much to do. First, we are going to have quantitative. And once you identify the signals based on the quantitative analysis, we are going to take them for qualitative analysis. And finally, we can say this is a signal identified from pharmacovigilance data analysis. Okay. So the qualitative, maybe we can spend some more time in the next class, but for today, we can focus maybe on the quantitative methods, the very important methods. We have some calculations to perform. We can focus mainly on those. Uh, Maybe sometime back, sometime after, we can see the qualitative analysis as well. So first of all, if you try to understand the signal, the meaning of signal means, I think on day-to-day basis, we can see so many signals. You can see some traffic signals. It will ask us to stop the vehicle or maybe start the vehicle and go forward, right? That's one kind of signal we can see. And no parking signal we can see in many places where we should not park our vehicle, right? That's one more signal we can see daily basis. And this is one of the signal which I like most. Like when I went to Australia, I have seen many signals like this. We can see the kangaroos on the road in the next 10 kilometers. So don't drive fast, go slowly, carefully. So that's what the signal we can see basically on the roads. So, and also I think regularly now also maybe you are checking your mobile phone that you got a message or you got a mail, right? So these are all the basically signals what we can see on day-to-day basis. The basic understanding, the basic meaning of signal is going to be like, it's going to alert us, right? It's going to be alert us. It's going to say something, what we need to do. That's what is called as signal. Similarly, in pharmacovigilance, also we are going to have something called signal, and we are going to analyze the data what we are generating from pharmacovigilance, and then we are going to understand there is a signal between an adverse drug reaction and the medication. We are identifying that first time, so we can call it as a signal. And this is the process what exactly going to be happen for pharmacovigilance. Hope you understand this in the morning. Basically, like whenever the patient comes to the hospital, we are going to treat the patient with the medication, and we are going to recognize, manage, and try to prevent the disease condition, and try to even recognize, manage, and prevent the adverse drug reactions. So once you identify the adverse drug reaction as a healthcare professional, maybe the doctor, nurse, or maybe the pharmacist, whoever it may be, once you identify the signal, we need to report it. Hope you have seen in the morning, we have a reporting form for ADR reporting. There is a form given by the IPC, Indian Pharmacovigilance Commission. The current version available is 1.4. So we are going to fill that form and we are going to send that information to the PBPI, the Pharmacovigilance Program of India, from all the ADR monitoring centers in India. So now currently more than 800 ADR monitoring centers are there. I think recently the number got touched to 900 centers in India. So all these centers are mainly responsible for reporting these areas to the PBPA program, and where in the national wide you have NCC, National Coordination Center, nothing but IPC, Indian Pharmacovigilance Commission. They're going to collate, they're going to collect and collate all the information, and from all the data what they're getting, both in India. So in India we have a PVP program. We are collecting all the areas. Similarly, internationally we have something called International Drug Monitoring Program, IDMP, International Drug Monitoring Program, which is basically running by UMC, Uppsala Monitoring Center, that is there in Sweden. They are going to collect area from almost all the countries in the world. I think more than 170 countries that are participating in the program. They are sharing all their areas to the UMC, Uppsala Monitoring Center, right? So they are going to collect all these areas throughout the world, and they're going to analyze all the information. They're going to do the analysis of all the data, what they're getting from different countries. So after analyzing, they can try to understand that, okay, these are the drugs which are mainly causing these kind of areas. They will get some information. So after getting that information, they'll try to act upon it. They will try to do something where they can reduce the number of adverse drug reactions. And it is not that they will take some action. They will also communicate that information to the various stakeholders. They will communicate that information to almost all the countries, so that now everyone knows that, okay, this is the drug can cause this adverse drug reaction.
they can take in care. So when that information go to the physician who is treating the patient, right? So they can take some necessary action when they're giving that medication to the patient. They will try to prevent as much as possible to occur that reaction for the same medication in the next patient, right? That's what is going to be done basically in the pharmacovigilance. So it's going to be the cycle. Basically, we can see a cycle of activities under pharmacovigilance, the different activities what we are doing basically. And today we are going to focus mainly on this analysis part. Like once you get all the information about the adverse drug reactions, how we are going to analyze and how we are going to identify the signals, basically. That's what we're going to focus mainly. And if you see the definition of signal, as per the WHO, there are many organizations, they have given their own definition for signal detection. If you see the definition of WHO for signal, what they say about signal is going to be like, it is a reported information on a possible causal relationship between an adverse event and a drug, right? And that relationship is being unknown or incompletely documented previously. That's what is called as a signal. So once you identify any association between an adverse event and a drug, and if you identify there is a possible causal relationship is there between the event and the drug, and it may be known or unknown already, we can call it as a signal, basically. And usually more than a single report is required to generate the signal, depending upon the seriousness of the event and quality of the information available with us. It is not that we got one single report that this drug is causing this reaction. With that single report, we cannot say that this is going to be a signal between the drug and reaction. Single report is not sufficient. If you get the same reaction for the same drug in good number of patients, by taking all this information into the analysis and we can identify the signals. We need to have at least more than one report to say the particular association is a signal. And WHO says that what are the signal you're going to generate? That may be already labeled one, labeled in the sense the information already available in the patient information leaflet, PAL, or it may be unlabeled as well. It may be expected or it may be unexpected. So anything can be a signal. If you identify that, okay, this drug is causing mainly this adverse drug reaction. If you identify that from the data analysis, you can say it as a signal. And based on the importance of that signal, based on the seriousness of the signal, we can go and work on further, and we can do some qualitative assessment. And finally, we can say that if this is very serious, we need to take some action against it, and then try to prevent these areas further. I think one best example, one starting example of pharmacovigilance is thalidomide disaster. Hope all of you know the thalidomide disaster happened in 1961, right? So that time, thalidomide, when we give to the pregnant woman, it caused adverse events in the newborn babies, phocomelia, the condition called abnormal formation of the limbs, right? So that was identified, and that was identified to be caused by this medication, thalidomide. And later on, decision was taken that this medication need to be banned to be given to the pregnant woman. It is only banned to be given to the pregnant woman, not for other disease conditions. We are still using that medication for cancer-related treatment, but this medication is not suggested to be given to the pregnant woman, right? So these kind of decisions we are taking on every day based on the analysis what we are performing by taking the data which we are reporting for the pharmacovigilance. And if you see the definition which is given by the EMA, one more important organization in the European Medicine Agency, what they say is about signal. The signal means a safety signal is an information on a new or known adverse event that may be caused by a medicine and it requires further investigation. Okay, so we are going to get some new information, novel information on a particular association once again between the medicine and the adverse event, and the signal, it requires a further investigation. It is not that just we are identifying the signal from the quantitative data analysis and we are going to take directly an action against that medication. So we need to go for further investigation, the qualitative assessment and other aspects. Then only we can take any decision related to the signal. And the safety signals can be detected from a wide range of sources. So mainly we are going to get the information from the spontaneous reporting. The spontaneous reporting in the sense whatever we are reporting, I think whatever we have seen in the morning about PVPI, how we are reporting areas to PVPI, all those things mainly comes under the spontaneous reporting. The spontaneous reporting, the meaning is going to be like, as a healthcare professional, when you're seeing the patient, when
when you're seeing the patient, and when immediately, like once you know that there is a drug which is causing the reaction in a patient, if you report immediately, irrespective of medication, irrespective of ADR, and irrespective of patient, we can call it as a spontaneous reporting. That means you are not particular to any patient, medication, and reaction. Whatever you come across in your daily practice as an area, you are reporting it. We can call it as a spontaneous reporting. Spontaneous reporting is a very, very important type of reporting in pharmacovigilance. You must be knowing. I think in these 5 days, you're going to learn many more. So you must be knowing about spontaneous reporting, a very important method which everyone follows in pharmacovigilance, basically for reporting the areas. And also we can get the information from clinical studies and scientific literature from all these literature means sources. We can get the information and we can go for the signal detection. And even the Uppsala Monitoring Center, they have defined signal in a different definition. Like a signal is essentially a hypothesis of a risk, and with a medicine, with the data and arguments that support it, derived from data from one or more of many possible sources. I think somewhat complicated definition, but once again, this is that it's a hypothesis. We are going to have we are going to once again do the data analysis, which is going to be identify the risk for a medicine, and where we are going to derive data once again from the many possible sources about the signal. That's what is the definition given by UMC. But however, basically speaking, like what are the definition given by WHO, European Medicine Agency, or UMC? Some of the important components, if you see from these definitions, from all these definitions, basically the signal means it is an information which is coming from different sources, and where we are going to have a information on potential harm which is caused by a medicine, and that requires further evaluation. So these are some of the important things we can see from all the definitions, even though definitions are something different from each other. But if you take the core component of the definitions, this is what we can understand basically about the signal. The signal means it's an information what we're going to get from different sources. We're going to get the information from all the sources, and that information is basically about a potential harm which is caused by a particular medicine. It is not that we are going to take a straight away decision. We need to do the further evaluation, and then we can take the decision. Okay, so this is an important aspect, some of the important keywords what we can take from the signal detection definitions. Hope you have some idea by this time what is meant by signal and why it is so much important in pharmacovigilance, right? So whatever we are doing in pharmacovigilance, at the end we are going to do this signal detection to identify some novel areas for the novel medications, so that we can take some action against it and try to prevent them. So why this is important, why the pharmacovigilance is important, basically means even though we are doing clinical studies among human beings for so many years, we are conducting phase 1, phase 2, phase 3 studies, and we are going to understand in detail about medication, especially about efficacy and safety. But we may not able to identify all the safety issues during the clinical trials, because we are giving the therapy for a short period. We are giving the therapy for a very few patients, few numbers, like thousands maximum we can give the medication, and where we are not having the long-term follow-up. The clinical studies basically we can do for 3 years, 4 years, right? So within these things, within the clinical trials, we may not understand enough about the safety of medication. But once the drug is available in the market, when the people are started taking this medication in a real-time situation, they can get more areas, they can get different areas than what we have seen in the clinical trial, right? So that's the reason all the pharmacovigilance activities we are doing after the drug is releasing into the market, when the drug is available in the market, many people will take it. We can see different spectrum of adverse drug reactions. So to identify all those things, basically we are doing the pharmacovigilance activities, right? After the drug is releasing into the market, when the people are taking these medications, we are going to identify the signals. So signal management, signal detection is not a single step process. We have mainly 3 important components in the signal management. One is going to be signal generation. We are going to generate first, and then we are going to strengthening the signal, and then we can take some action and follow it up. That's what we are going to do basically in the signal management.
Under each area, we are going to have two different steps. So in the signal generation, we are going to have two steps. The first is going to be signal detection. And out of all the signals what we're detecting, we are going to select few which are important. So when you do the quantitative assessment, you're going to understand 100 signals to identify some important relevant signals, and then we can strengthen those signals. Under the strengthening, we have a strengthening and assessment. So we need to strengthening by adding more information to it. We can go for the qualitative assessment, add more information. Whatever the information available with us regarding that association, we can add that information. We can go for the final assessment, and under the follow-up, we are going to have something like action. So based on the information what we're having, we're going to take some action. The action can be like, we can mention that restriction of usage of that medication among certain people. For example, a nimesulide. I think hope you hear the term called the medication called nimesulide. Long time back, I think in 2011 somewhere, 2013 or 11 somewhere, and the government of India banned that medication to be given to the pediatrics, especially the children. We should not give that medication alone, or maybe the combination. We should not give it because it is causing some hepatitis and pancreatic related events, especially in the children's, right? So that's what the decision taken by the government of India, by the regulatory authorities, based on the information available at that point of time, and based on the signals what they have generated for the nimesulide. So they have taken the action not to be given to the pediatrics, and after that taking the action, still they need to follow up and then see whatever the action they suggested, is it really followed or not, right? So they need to understand, is it really followed by the people or not? We need to have that even follow up as well. And during the follow up, we can understand that how much it is followed. But the current situation about nimesulide, we did some research on that recently. Nimesulide is still used in pediatric population. Still, the pediatric people are getting some very severe form of adverse reactions, especially dermatological reactions. They're still getting, not only in India, in many other countries. That's what is we can understand during the follow. So these are the 6 important steps we are going to have under signal management. We are going to detect first all the signals by using some quantitative methods. That's what we are going to discuss today. And out of all the signals what we're identifying from quantitative methods, we are going to select few which are important, and we are going to strengthen them by adding new information to it. And finally, we are going to make an assessment of the particular signal. If you feel that action need to be taken, we can take some action. And after taking the action, still we need to follow up and then see what exactly the followed after taking the action, right? Hope it is clear for all of you. Hope you have noted down at least these 6 important steps, what we are going to have under the signal management in pharmacovigilance. And we are going to focus mainly now on signal detection, especially by using the quantitative methods. So this is once again the same thing, what I explained. There are different steps we are going to have. We are going to detect the signal detection, signal validation, signal confirmation, signal analysis and prioritization, signal assessment, and recommendation for action. These are some other different steps followed in the European region, in the European Union signal management. How exactly they will do means they will do in this process. So the signal will be recommended for action, and that will be communicated to all the relevant stakeholders to implement that particular action, what is suggested by the European Union, EMA, European Medicine Agency, right? So whatever it may be, finally, this much process is involved in the signal detection. It is not that with one single step we are going to perform everything, with one single calculation we are going to perform everything and then take an action. It is multiple steps are involved, and it will take so long time to develop any signal and then implement it. And under the signal detection, uh, there are some quantitative methods we are going to use it for identify the signals. From here onwards, you just focus it. I think most of you are maybe may not be exactly from pharmacy practice or maybe for PharmD. Maybe some of you maybe even be pharmacy students. They're very simple. People will make it complicated basically, but they're very simple. I'll try to make you understand very simply, okay, these concepts. But just note down these things. They're not very big things. Just note down some of the important points so that you will get more idea. So in future, if you're going to work in pharmacovigilance,
these things will help you a lot to get more ideas in future. Okay, so the methods of data mining, mainly we are going to follow two important methods, the two important measures for identifying the signals. One is a disproportionality measures, another one is a Bayesian measures. And under the disproportionality measures, we have two important things. One is a proportional reporting ratio, PRR, and along with that, we are going to calculate the chi-square value. And we have a reporting odds ratio, the other one, ROR. Along with that, we are going to calculate the 95% confidence interval. Okay, so you just note down these things in your notebook. Under the disproportionality measures, we have mainly two important things we are going to calculate. One is a PRR, proportional reporting ratio, and along with that, we are going to calculate the chi-square value. And the other one we are going to measure is going to be the reporting odds ratio. Along with that, we are going to calculate the confidence interval 95%, right? And under the Bayesian measures, somewhat complicated formulas, we are going to use it here rather than very simple formulas we are having in the disproportionality measures. So under the Bayesian, we have information component IC, information component IC value we are going to calculate. And for that, one of the important method we are going to use it for calculating this one called BCPNN. The BCPNN is a Bayesian confidence propagation neural network method. That's the one we are going to use it basically for calculating the information component IC. So this is the one basically calculating by the UMC, Uppsala Monitoring Center, for identifying the signals. The one which is using by the UMC for identifying signals is going to be IC value, information component value. Okay, this is the method we are going to use it here, Bayesian confidence propagation neural network method, right? And the last one, the fourth one is going to be like EBGM. The EBGM is an empirical Bayesian geometric mean. That is the one using by US FDA, the United States of America FDA, Food and Drug Administration. They are using mainly this EBGM for identifying the signals. And they're also following one method for calculating this one. EBGM is going to be MGPS method. The MGPS means it is a Dumonchel's multi-item gamma Poisson shrinker method. Okay, so if you don't remember even this method, not an issue, but try to remember this the methods which are highlighted in the red color. Just note down those things. That will be sufficient for you at present. Under disproportionality, we have a PRR, ROR. Under the Bayesian measures, we have information component and empirical Bayesian geometric mean. Right? Hope you noted down these four important methods. There are so many other methods, the quantitative methods we are using for signal detection, but these are the four important methods commonly using at present throughout the world by many industries and then regulatory authorities. Even in academics, we're going to use mainly these things when we are generating any data analysis. Okay. So let us go and see the calculation, how we are going to perform. Especially, I'll show you how to calculate this PRR and ROR. They're very easy to calculate by having some simple formulas. Even IC and EBGM, they have some complicated formulas, but PRR, ROR, we have some simple formulas for calculating the signals. I'll show you. This one is a 2 by 2 table, a very simple 2 by 2 table, right? Uh, I request everyone to note down this one table so that you can understand better what I'm going to discuss in the next few slides. Okay, I'll give you 2 minutes. You just note down this one table. In the left side, we have this drug of interest. And drug of interest means for which drug we want to calculate the signal, basically. For example, we are taking canagliflozin. Canagliflozin is a medication used for treating diabetes. And this medication mainly comes under the classification of SGLT2 inhibitor. That's a sodium glucose co-transporter 2 inhibitors, a novel class of antidiabetics, right? So under that, the first medication came to the market was canagliflozin. Very important. People are using nowadays currently canagliflozin for treating diabetes. Okay, so that's what we are focusing mainly. This medication we are focusing, and the reaction what we're focusing is going to be like pancreatitis. The pancreatitis means inflammation to the pancreas. That is what the reaction we want to test. So we want to identify, is there any signal detected between this medication and then reaction. Okay, so I want to know any signal identified between this drug and reaction based on the data what we are having under pharmacovigilance. Like PVPI getting so much of data
from all these AD and monitoring centers, maybe they can try to analyze from all this data the signal between the canagliflozin and pancreatitis. Okay, are you getting it? And this is about drug of interest. And here we are going to have all other medications. In the sense, in the entire database, if you take any database, it is not only canagliflozin medication will be there. There will be so many other medications where we have the reports. And even the reaction also, it is not only pancreatitis will be available there. There may be so many other reactions, including pancreatitis, right? So we are going to keep pancreatitis here, and here we are going to keep all the remaining reactions, except pancreatitis, all the remaining reactions, except canagliflozin, remaining all the medications, right? That's what we are keeping here in the left side, in the right side on top, and then we have a total here also total. Okay, so just an example, I can show you, like, imagine that this many number of areas currently available with WHO in UMC, Uppsala Monitoring Center. Imagine that this many number of reactions. How much it is? So 95 lakhs, 95 lakhs, 90,312 reactions currently available. For example, there are many more currently available in the database of UMC. Imagine, right? So out of these many reports which are available in the database, when we filter it, when we type the medication name canagliflozin, we got to know that out of this 95 lakhs 90,312, we got to know that 19,476 reactions on this medication. Which one? Canagliflozin. Hope you're following me. Out of this many reactions, when we filtered, when we typed the medication in the database, we got to know that 19,476 on canagliflozin. And among these reactions, among 90,476 reactions on canagliflozin, we got to know that 225 having the information of pancreatitis. In the sense, we have those reports that 225 reports that canagliflozin causing pancreatitis. Out of these many reports on canagliflozin, we got 225 reports showing that canagliflozin causing the pancreatitis, right? And the remaining all the reports, that means 19,476 minus 225, if you make it, we are going to get 19,251, right? So remaining all the reactions having remaining all the reports having reaction other than pancreatitis. In this many reports, there is a pancreatitis. In this many reports, there are other reactions for canagliflozin. Same canagliflozin only. This many are pancreatitis, and this many are remaining all the reactions. Is it clear till now? So this is going to be, I'll tell you, the codings I'll tell you later. And then in the same database, out of this many reports, now when you filter the reports based on the reaction, when you type pancreatitis, we got to know that there are 31,046 reactions on pancreatitis. How many? 31,046 reports on pancreatitis. These many reports are there. And remaining all are not having pancreatitis. They're having some other reaction. Is it clear? So when you type canagliflozin, we got this many, and out of this many, 225 on pancreatitis, remaining on other reaction. When you type pancreatitis as a reaction in the search box, you got to know this many are having pancreatitis. In these many reactions of pancreatitis, 225 are having the medication of canagliflozin, and remaining all are having the other medications. Except canagliflozin, the remaining all medications are there in this many reports. When you combine these two things, it's going to be this much. And now you are having anyway this value. You are having this value also. This one minus this one, you're going to get this value, right? You are having this value, and you are also having this value. This one minus this one, you're going to get this one. No need to search for all the things. It is not possible to search for all the things in a database. Simply, if you have 4 numbers, remaining all the numbers, you can get it very easily. Only 4 numbers. What are those 4? This total number, like A, B, C, D, total number of reactions available in the database. If you have this number, and among all these things, how many are on this drug of interest,
that is A plus B, if you have that. And if you have the information like how many on drug of interest and reaction of interest, this number A, if you have, and then how many reactions are there for pancreatitis in the entire database, if you have this number, like this 4, 1, 2, 3, and 4. If you have these 4 numbers, sufficient enough, you don't need to calculate other things. You can just subtract and get other numbers. When you have this one, subtract this one, you're going to get this one. When you have this number, subtract this one, you're going to get this number. When you have this number and this number, subtract this one from this number, you're going to get this one. So like that, we can get the rest all numbers from these 4 numbers. When you have these 4 numbers, that is more than sufficient to identify the signal, and rest all you can get it just by subtracting from the other number, right? So we are giving the coding now here, A, B, C, D, and this is going to be A plus B, total number of reactions for the drug of interest, C plus D, total number of reactions for the remaining all the medications, A plus C, total number of reactions for this reaction of interest, and all other reactions, B plus D, right? We're going to have this one. And this is going to be A plus B plus C plus D. That means the total number of reports available in the database. So anyone can do it very easily when anyone is having a complete database of all the areas, what they're getting from the different sources. And from that database, they can search and get the numbers on drug of interest and then reaction of interest. They can create this table very easily. So this table is very important for calculating any signals. We need to have this one, right? So now, how we are going to calculate the signal? We have 2 important, very simple formulas, very, very simple. They are simpler than the formulas what you have seen in your 10th class and then maybe 12th class, really. Very simple formulas, you can easily remember. Like PRR, we are going to calculate the proportional reporting ratio. We are calculating just by having this A by A plus B divided by C by C plus D. A by A plus B means 225 divided by 19476. 19476, and C by C plus D is this 30821 divided by this much number, right? A by A plus B divided by C by C plus D, you're going to get this PRR, proportional reporting ratio. Very simple. And then ROR also, once again, we have a simple formula. It's A divided by B, C divided by D. That's it. Just note down these 2 formulas, very simple formulas for calculating this PRR, proportional reporting ratio, and reporting odds ratio. From the simple formulas, we can understand the signals between the drug of interest and reaction of interest. Okay, so hope you noted down A by A plus B divided by C by C plus D for PRR, and A by B divided by C by D for ROR. If you are a pharmacy practice student or maybe the pharmacy student, especially, you could have known the calculation of relative risk and odds ratio in pharmacoepidemiology. They're very similar to this PRR and ROR. In pharmacoepidemiology, we can call this one as a relative risk, this one as a odds ratio. In pharmacovigilance, we are calling them as this one as a proportional reporting ratio, and this one as a reporting odds ratio. Formula is same, only the name what we're using is become different in pharmacovigilance and pharmacoepidemiology. Okay, so now if you keep these values and then try to calculate the PRR, so this is what the PRR we are getting here, A divided by A plus B, C divided by C plus D. So the PRR what we got is a 3.6, and there's a one more formula in addition to this one, A by A plus B, C by C plus D. We have some additional formula. I did not show here, but somewhat complicated formula is there to get the chi-square value. Just by using these 4 values, we can get the chi-square value for this PRR also. So the chi-square value what we got here is a 418.2. PRR what we got is 3.6, and the chi-square value what we got is a 418.2, right? And similarly, we have a ROR value, reporting odds ratio. It is A divided by B whole divided by C divided by D. If you make it, we are getting the ROR value. Very simple, the ROR value 3.6. And along with the ROR, we need
this confidence interval as well, 95% confidence interval. And for that calculating 95% confidence interval, we have one more formula. I did not show here, but you can get it easily by keeping in any calculator, online calculator. You can get this confidence interval. No need to mug up the formula, but you need to interpret. You need to understand how to interpret these values. That's why I did not show the formulas here, but there are formulas to calculate all these things. Okay. So ROR, what we got is 3.6, and along with that, we got a 95% confidence interval. In the confidence interval, mainly we are going to have two values, the lower limit and upper limit. So here the lower limit, what we got is 3.2, and upper limit, what we got is a 4.1. I request everyone to note down these values, because based on these values, we are going to understand is there a signal identified between the canal frozen and pancreatitis. So these values are important to understand the signal between the drug and reaction. So remember the PRR 3.6, chi-square value for 418, and the ROR value is 3.6 once again, and the confidence interval is from 3.2 to 4.1, right? Is it okay till now? And now, when to say, like I did not show the formulas for IC, information component, and then EVGM, empirical bias and geometric mean. Those are somewhat complicated formulas I did not show here, but that you can get it from any pharmacovigilance textbooks. You can get the formulas very easily. By using them, you can calculate even the IC value and EBGM value. Okay, not an issue. Why I shown these formulas means they're very simple formulas. You can do even manually. That's why I shown you how to calculate the PRR and ROR. And IC EBGM, you can do it by using any online software, or maybe by using some advanced calculations. You can get it there. Fine. So now, this is a very important slide. After doing this calculation, after getting the PRR value, ROR value, along with the chi-square value, confidence interval, and IC value, EBGM value, when you get all these values, right, from this calculation, when to say there is a signal identified between the drug and reaction, when to say, there are some standard statements you need to remember. Based on these statements, we are going to say that there is a signal identified between the drug and reaction, right? So remember this. If you're not able to even note down, you can take a picture of this slide, a very important slide. So when to say there is a signal identified between the drug and reaction. It is different from each and every measurement what we're calculating. For example, for PRR, for proportional reporting ratio, when we are going to say there is a signal identified means a signal is detected if the count of co-occurrences more than or equal to 3. The count of co-occurrences means the number of reactions on this particular medication and then particular reaction. So whatever we are having here as a A, whatever we are having here as a A, so this many number of reactions are there which are having the information on canal frozen causing pancreatitis. This number should be at least 3. This number should be minimum 3. Then we can say signal. Not only that one, there are some other parameters, but this is one criteria. Under PRR, there's one criteria that this number should be, whatever the number we are having here, that should be how much? More than or equal to 3. Okay, that's the first criteria under PRR. Okay, count of co-occurrences should be more than or equal to 3. And the PRR value, whatever you are getting, that should be more than or equal to 2, with an associated chi-square value should be more than or equal to 4. That's it. Very simple. Once you calculate the PRR, once you calculate the chi-square value along with the PRR, when you can say signal identified means the count of co-occurrences should be more than or equal to 3, PRR value should be more than or equal to 2, and the chi-square value should be more than or equal to 4. So now, for the calculation, what we perform, all the 3 criteria are satisfied for PRR. Here we have more than 3 reactions, and the PRR is more than 2, right? And the chi-square is more than 4. Obviously, it is much higher than 4. Okay, so the cutoff values are 3, 2, Sir? 4. Yeah, Sir, actually, we have a little time crunch, so we were wondering whether I'm we could finishing. wind up by 4 o'clock. I'm finishing in 5-10 minutes. Yes, sir. 5 minutes, it will be over. Okay. Yeah. So the PRR is more than 2, obviously, and chi-square is more than 4, and the A value is more than 3. So all the 3 criteria are matched,
And now we can say confidently from the PRR, based on the PRR, we can say that there is a signal identified between the canagliflozin and pancreatitis. That's it, over. So that's what we're going to do, basically, the signal detection by using PRR. Very simple calculation and very simple understanding. This is what need to be matched for the PRR. And the next is going to be ROR. And when we can say signal based on the ROR means a signal is detected if the lower bound of the 95% confidence interval exceeds 1. Okay, the meaning is like when you do the calculation of ROR, we need to see basically this, not this ROR value. We need to see basically the lower limit of this confidence interval. Lower limit means the first value. So whenever this first value is more than 1, whenever you are getting the confidence interval lower limit more than 1, we can say the signal identified between the drug and reaction. Very simple. For the PRR, we need to consider 3 values, but for the ROR, 1 value is sufficient. We are going to take the lower limit of 95% confidence interval of this ROR. Whenever it is more than 1, we can say there is a signal identified between the drug and reaction based on the ROR. The next comes IC, information component, which is following basically by the UMC, Uppsala Monitoring Center. And there also we are going to get something called lower bound of the 95% credibility interval of this information component. So we are going to have one value for IC and we are going to have one lower limit for IC. So we can code it as IC025. So IC025 is a lower limit of IC value. So whenever that lower limit of IC value, nothing but IC025, when it exceeds 0, that means whenever you're getting a positive value of IC025, we can say there is a signal identified between drug and reaction. I did not show you the calculation here, but for IC, we are going to calculate 2 things, IC value and IC025 value. IC025 nothing but it is a lower limit of the IC value, right? And that should be more than or equal to 0. Then we can say, actually it should be more than 0, not equal to, it should be more than 0. We can say there is a signal identified. And the last one is EBGM, empirical Bayesian geometric mean, right? So by using EBGM, when we can say signal means it is once again, we are going to have EBGM value, we are going to have a lower bound of the 95% confidence limit of the EBGM. So whenever the lower limit of this EBGM exceeds 2, more than or equal to 2, we can say there is a signal identified between the drug and reaction. So this is a very important slide, and once you calculate any one of these or maybe all of this, when to say signal identified between drug and reaction means it is based on this one. Okay, so this is the criteria we need to follow basically to say that there is a signal identified between a drug and reaction. This is what is called as quantitative signal detection. We are following some formulas, we are doing some calculations, we are getting some numbers. Based on the numbers, we are going to say there is a signal identified between the drug of interest and reaction of interest whenever these criteria are matching. Whenever these criteria are matching, we can say there is a signal identified. So I'll show you in the final slide. I'll show you one of our recent article published on this SGLT2 inhibitor associated pancreatitis. So we have identified that these SGLT2 inhibitors like canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, these medications mainly comes under this classification. We have identified that they are causing mainly the pancreatitis by conducting subsignal detection analysis by taking the data from this FDA adverse event reporting system, which is available freely in the public domain. And these are the numbers what we got it. You can see basically, so these are the numbers of reactions like N combination in the sense canagliflozin and pancreatitis reported in this many reactions, this many reports. Dapagliflozin pancreatitis, this many reports are there. Empagliflozin pancreatitis, this many reports are there, and all are more than or equal to 3. So one criteria got satisfied for the PRR, right? All are more than or equal to 3. And then if you see the PRR for all the 3 medications, the PRR is going to be more than or equal to 2. So once again, for all the 3 medications, the PRR value got satisfied, 3.6, 3.2, 3.9. Basically, we need only 2 more than or equal to 2 to say that there is a signal identified. And the chi-square value should be more than or equal to 4. Obviously, we are having more than or equal to 4 for all the 3 medications, right? So now for PRR,
all the criteria got satisfied, the reactions, total number of reactions more than or equal to 3, PRR more than or equal to 2, and chi-square more than or equal to 4. So all three are satisfied, all the three criteria satisfied the PRR. We can say that there is a strong signal identified between all the three SGLT2 inhibitors and pancreatitis based on the PRR. And based on the ROR, as I told you, we need to take mainly the lower bound of ROR, the lower limit of the 95% confidence interval of this ROR. So whenever this lower bound of ROR is more than or equal to 1, we can say there is a signal identified. And all these three values are once again more than or equal to 1. We can clearly understand there is a signal identified based on the ROR also. And then also we have calculated this IC025 value. IC025 is a information component lower limit value. And how much it should be to say there is a signal, IC025 value based on the previous slide, it should be more than 0, right? So it should be more than 0 to say that there is a signal identified between the drug and reaction. So here we can understand, we can see that it is obviously more than 0, 1.6, 1.4, 1.7 we got it. And even based on the IC025, we can say there are signals identified between these reactions and pancreatitis. So based on this now, after we published, now once again there are so many articles came up on this association. Now still so much is going on this association. At least after we publish this one, because it's a new information not available from the clinical trials, at least people got to know that this medication can cause pancreatitis. They can be cautious. Whenever we are giving this medication to the patient, we can be cautious. We can check this pancreatic enzyme levels frequently to understand that if the person is getting any pancreatitis or not. So people can be aware based on this signal detection analysis. Okay. So that's all from my end about the signal detection analysis. Very briefly, this is not a complete topic of signal detection. Very brief information. I thought I can make you understand what's meant by signal detection, at least from this topic. If you are interested further, there are so many online lectures which are available on this topic. You can go through and then get more understanding in the future. Thank you very much. If you have any questions, maybe we can discuss further. Thank you so much, sir, for this informative session. Any students are having question? 2 question can be asked. Anyone is having question? So, thank you, sir, for your presentation. I Thank think you. no one is having any question. No problem. I think they can reach to me or maybe to the organizers of Naipur Hajipu. Even they can able to answer all the queries. They can Yes, reach sir. to them anytime. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now we are going to have a tea break for 15 minutes. Meantime, the quiz committee will take over the stage and make arrangements for quiz competition. I request the participants to be ready and participate in the quiz. Once the quiz competition is completed, all the participants are requested to divide among themselves into 5 groups based on the institutes. Please make 5 groups. We have 5 volunteer teams are ready to take you to the laboratories of Naipur Hajipur, and they will give you a small detour of all the laboratories and animal house and the sophisticated analytical instrument facilities as well. Thank you very much. Now we have tea break for another 15 minutes. Then we'll regroup accordingly. Thank you. I request the quiz committee to take over. Thank you. Before the quiz competition, I would like to request you to sit for 5 minutes. We have some felicitation program for the representative of the different colleges. So first, I would like to invite Dr. Sivli Numani, sir, principal of SNS College. I will request Dr. Suhani, ma'am, please felicitate him.
I will request from the representative from Narayan Institute of Pharmacy, please come up on the dais. I will request Dr. Suhani ma'am to felicitate for the same. Next, I would like to request representatives from Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences to come up on the dais. And I will again request Dr. Suhani ma'am to felicitate the same. No, she left. हाँ, बोला है. Organization. Yeah, Undela sir, are you there? Hello? Hello. Yeah, Undela sir? Yes, sir. Yeah, I'm here. Yeah. Thank you so I'm, much. I'm, I'm, I'm all happy the- to see that. So I just want to see those. I'm here. I'm happy to see the function. Thank you so much. And on behalf of organizing team as well as the Department of Pharmacy Practice, I'm really thankful to you, for sparing your invaluable time My pleasure, sir. and, My pleasure. creating awareness in this part of the region. And Bihar is the state that is always known as a underserved state. And, doing any activity for this state, that too from coming somebody from other state, though physically you're not here, but I could see, you've they made your special provision for the time. And I know Yes. today is a very busy day, IPC event there was there in the morning. Yes. Yes. Once again, on behalf of our department, I'm again thankful to you. Thank you Thank you, so sir. much for your presence being here. Thank you, sir. Thank you very much. My pleasure. Always. Thank you. Okay. Bye. Next, we will like to call Dr. Samit Dingra sir on the dais for felicitating the as a convener of the and the organizing committee head for this 4th National Pharmacovigilance Week. I will call Dr. Suhani ma'am to please felicitate him. I would like to call also Dr. Krishnamurthy sir to come up on the dais and take the token of gratitude. So, okay, all the students can have tea, and after the tea break, they should come for the quiz competition.
Thank you.